जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं हूं डॉक्टर मोइन अख्तर खरल, graduated from Nikhtar Medical University. The purpose of creating this group is to promote the safest medicine among the peripheries of Pakistan. As you people know, in tertiary care setups, we usually deal the terminally ill patients with the with complexities. So, 1 year ago, I decided to start a teaching program to the young doctors, to the medical students, the basics of medicine. So here is our first lecture. How will we approach a patient with fever? As you people know, the most common complaint we came across throughout our life is कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है. So when a patient presents to us with history of fever, how will we approach? So fever basically is not a disease, it is the manifestation of some other illness, some other pathologies. तो इसमें ये है कि 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने हिस्ट्री पे पूछने हैं कि बुखार कब से है. तो पहला क्वेश्चन बुखार कब से है, इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि 15 दिन से कम का फीवर हो तो यूजुअली हम एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं लाइक फ्रिंजाइटिस, लाइक एलआरटीआई, द यूटीआई, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, सेलुलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया. और अगर 15 दिन से ज्यादा का फीवर हो तो फिर हम डिफरेंसेस अपना ब्रॉड रखते हैं लाइक क्रोनिक इलनेस, सम मैलिग्नेंसीज, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रूसिलोसिस, SLE, thyrotoxicosis, and so on and so forth. So we will discuss the most common illness in the start and then we will broad our differential. So पेशेंट से आपने पहला क्वेश्चन ये पूछना है कि बुखार कब से है. तो पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब 2 दिन से बुखार है. तो अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये कोई एक्यूट इलनेस है, ये कोई ल्यूकीमिया लिम्फोमा आप बाद में सोचेंगे, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आप बाद में सोचेंगे, पहले आप कॉमन इलनेस सोचेंगे. तो दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री पे हमारा ये होता है कि बुखार के साथ और क्या अलामात हैं. तो इसकी बेस पे हम फीवर को कैटेगराइज करते हैं फोकल फीवर एंड नॉन फोकल फीवर. तो पेशेंट आपको कहता है डॉक्टर साहब बुखार के साथ गला खराब है, सो दिस कैन बी द फ्रिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस. पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे बुखार है और नजला बह रहा है, नाक बह रहा है, रनी नोज है, सो दिस कैन बी द रेनाइटिस. फीवर विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस can be laryngitis. Fever with cough can be LRTI or viral bronchitis. Fever with yellow discoloration of sclera can be acute hepatitis. Fever with pus in urine or burning micturition or flank pain, this can be the UTI or pyelonephritis. Fever with limb swelling, so this can be the cellulitis. Fever with the loose stools and vomiting, so this can be the acute gastroenteritis. Fever with inflamed air can be otitis externa. Fever with air discharge, this can be the otitis media. Similarly, fever with altered level of consciousness, so this can be the CNS infections. So on the basis of focal of fever, if patient presents with fever and some associated symptom, some associated system, so we label these patients as focal fever. So pharyngitis, tonsillitis, rhinitis, they all are focal fever. On the other hand, patient present to you with history of just fever and no system involvement. तो जब भाई डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ बुखार है, so this can be the malaria, this can be the typhoid, this can be the dengue fever, less than 15 days. Obviously अगर greater than 15 days होंगे तो हम ब्रूसिलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस और malignancies का लाजमी सोचेंगे. और इसी तरह तीसरा क्वेश्चन हिस्ट्री पे हमने ये पूछना होता है कि फीवर है तो उस हाई ग्रेड है जो लो ग्रेड है. तो पेशेंट आपको कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सर से बुखार आता है. इन पाकिस्तानी सेटअप पेशेंट से डॉक्टर साहब सर से बुखार आता है, तो ये यूजुअली हम इनको हाई ग्रेड फीवर इंटरप्रेट करते हैं. और एक्सिलरी टेम्परेचर अगर 101 या इससे ज्यादा है तो दिस इज हाई ग्रेड फीवर, और अगर एक्सिलरी टेम्परेचर 101 से बिलो है तो दिस इज लो ग्रेड फीवर. हाई ग्रेड फीवर इज यूजुअली द मैनिफेस्टेशन ऑफ सम बैक्टीरियल पैथोलॉजी. So like the patient presents to us with history of high grade fever and sore throat, so this can be the bacterial pharyngitis or tonsillitis. And low grade fever is usually the manifestation of some viral pathology, like the patient presents to us with history of low grade fever and runny nose and myalgias and cough. So this can be the some viral illness.
Sometimes patient presents to us with history of runny nose, sore throat, hoarseness of voice, cough, multi-system involvement, even the loose stools. So this is usually the viral manifestation of the disease. So during this course, during this all our studies, during this session, we will discuss how we label a patient with pharyngitis, how we'll take the logical history, how will we suspect malaria, how will we suspect enteric fever. सो अगले टॉपिक में हम फ्रिंजाइटिस से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे. तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी कैपेबल इनफ to run our own clinics and OPD independently with economical brands, with basic interpretation of labs, with urgent referral when needed, and as well as the contraindication of the medicine, pediatric doses, peds medicine, like a patient presents to us with the history of fever and sore throat, and we are labeling this as a patient of pharyngitis. So the similar patient when pregnant comes to you, how will you prescribe this patient? And the similar and the pediatric age group comes with the similar complaints. How will we label manage this patient? So throughout this course, we will learn all these pathologies. Assalamu alaikum.